Hello lovely people, I am Radha Tripathi, your mentor for this detailed, insightful and comprehensive analysis of Chhattisgarh Judicial Services Prelims Examinations 2023. Okay, so what we'll be doing in this session, this will be a analysis with explanations. So what will be the use of it? You will be easily fetching 15-20 extra marks in your upcoming examinations by just watching this session. Alright. So before proceeding further, I must tell you the massive strike rate which we achieved in the last examinations which happened on February 26. It was massive 93%. See, what is a strike rate actually? Strike rate means कि कितने percent of the questions have come from our content, from our simplified notes, from our mock tests or from our question banks. So वो आए थे 93% और किसी भी examination का 93% चीज़ उसमें से आए जो आपने पढ़ा हुआ है, there is no way that you can fail in that examinations. So what is the reason behind such high strike rates is the quality content which Edzorb provides to you, and it is because it is made keeping in mind the theme and the pattern of the examinations. All right, and this is not it. It is made so engaging with the visual representations through simplified notes, short stories, that the average time spent on our app is more than 4 hours by our students. And not just this Chhattisgarh Judicial Services. Earlier also in 2020 we achieved 91% of the strike rate, and in Rajasthan 2021 examination we achieved 100% of the strike rate. And these are some more examples. All right. So without any further delay, let's get started with this session. Okay, so first question we have is from the IPC. The word court of justice has been defined under which section of the IPC? This is the section based questions, और काफी सारे states में ये tendency होती है कि वो section based questions आपसे पूछें, तो मतलब जिसको हम बोलते हैं index based questions. So the correct answer here is section number 20, which is option number B, and this was from the Edzorb Law Q Bank module 8. Okay, तो अब आगे पढ़ते हैं. अब सी क्वेश्चन के नीचे जब हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है ना, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं. एक बार तो वो दोबारा रिवाइज हो जाती हैं, एंड फर्दर हमें 4 एक्स्ट्रा चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं जिससे आगे आने वाला क्वेश्चन जो है वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब जैसे सेक्शन 20 तो हम पढ़ेंगे ही साथ में कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है और सबसे पहले प्रोवाइडेड कहाँ पर है, पर हम साथ ही पढ़ेंगे कि सेक्शन 19 में जज की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है. ये भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि जज कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, देन यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज इन सेक्शन 19 बिकॉज यू हैव रिवाइज्ड इट हियर. Okay, so what is meant by the court of justice? A judge or a body of judges empowered by the law to act judicially as a body. Judges acting judicially are called court of justice. तो court of justice सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सेशन कोर्ट की. इट इज जहाँ जज बैठेगा कोर्ट वहीं होगी. जहाँ जज बैठ के जुडिशियली एक्ट कर रहा है कोर्ट वहीं होगी. वो एक डायलॉग है ना, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है. तो वैसे ही जज जहाँ बैठेंगे, जहाँ वो जुडिशियली एक्ट करेंगे, वही कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा. ऑल राइट. और अब सेक्शन 19 भी देख लेते हैं कि जज क्या होता है. जज मीन्स द वन पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट. ओके, definitive judgment if not appealed or confirmed by the other authority. ठीक है, अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि a magistrate while committing the case for trial is not judge. क्यों? क्योंकि वो उसको डेफिनेटिव जजमेंट नहीं दे रहा, वो सिर्फ केस को आगे पास कर रहा है. ऑल राइट. और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जामिनेशन में कि हु इज अ जज, तो आपको एक करेक्ट मार्क करना होता है. Okay, now we have question number 2. Which of the following cases is not related to bigamy? R versus Tolson, R versus Beat, R versus Dolvin, or State of UP versus Premi? The correct answer is D. And this was from the flashcard series of Edzorb Law Premium 3.0. See, Queen versus Tolson भी related है bigamy से. सिर्फ State of UP और Premi appeal ये किससे related है? This is related to section 302 and section 304 of IPC. All right. Now we have third question. The words candidate and electoral rights have been defined under which section of IPC? The section 171, 171A, B, C. The correct answer is B, 171A. And this is from the simplified notes of the Edzorb Law Premium 2.0. चलो अब देखते हैं कि क्या है section 171A. It is provides about the definition. Who is a candidate? A person is nominated as candidate at any election. अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है. He is the person who came in the prison van. It happens only in India. Prison van में आके इन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है RJD टिकट के लिए from the Mokama Assembly seat in on this date. See, this is how we जैसे हमने कुछ पढ़ा और उसके साथ हमने एक स्पेशल चीज़ जोड़ दी तो हमको ये याद रहता है. अब ये पिक्चर जो है ना, ये आपको याद रहेगी. जब आप 171A आपको जब भी एग्जाम में आएगा, you will remember this man. Who is he? He is अनंत सिंह.
171 ए में कैंडिडेट है, ऐसे अनंत सिंह करके कोई आया था, ही गेव हिज सिविल प्रिजन वैन में आया था एंड देन ही गेव हिज नॉमिनेशंस. ओके, फिर क्या क्या, बी डिफाइंस द इलेक्टोरल राइट, द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट, नॉट टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट, राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, राइट टू वोट एंड राइट टू रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन. Okay, now we have question number 4. Causing death to a child in mother's womb is not homicide. It is provided under, बहुत ही simple question है, बहुत ही important section है, section 299. The correct answer here is explanation number 3. और मैं आपको बता दूं, जो अभी रिसेंटली असेंबलीज में, पार्लियामेंट में चल रहा है, द न्यू आईपीसी, द न्यू एविडेंस एक्ट एंड न्यू सीआरपीसी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कंसेप्ट्स वही रहेंगे, सिर्फ सेक्शन नंबर ही हो सकता है कोई आगे पीछे हो जाए, और हो सकता है कुछ कंसेप्ट्स भी ऐड ऑन हो जाए, तो लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. एड्जॉर्ब इज हेयर टू प्रोवाइड you the simplified notes of that very act within the 1 month of its publications, so you need not to worry about that. Okay, now let's see the simplified notes of the explanation of 299. See, 299 में 3 एक्सप्लेनेशंस गिवन है. अब इस बार तो आ गया एक्सप्लेनेशन 3. हो सकता है जो अपकमिंग एग्जाम्स है या किसी और स्टेट के एग्जाम में एक्सप्लेनेशन 1 और 2 के बारे में पूछ लिया जाए, तो हमको वो साथ में तीनों चीजें पढ़नी है. ठीक है, जैसे ये हो गया लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर एंड डिसीज, बॉडीली इन्फॉर्मिटी, डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वूम, दिस इज द थर्ड एक्सप्लेनेशन, एंड सेकंड एक्सप्लेनेशन इज रिसॉर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट. ओके, okay, so now next question we have is question number 5. Which of the following statement is correct? In sedition, the consequence is immaterial, material, or it acts as a mitigating factor, or it becomes material only if it is the foreseen consequence. The correct answer is A. The consequence is immaterial. आपकी intention देखी जाएगी, consequence क्या हुआ वो नहीं देखा जाएगा. ठीक है, तो this is from the simplified notes of the Edzorb Law Premium 2.0 section number 124A. देख लेते हैं ये क्या है. सो सेडिशन कैसे हो सकता है? बाय वर्ड्स, बाय साइन और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, और भी कोई मेथड हो सकता है. क्या कॉज और इफेक्ट होना चाहिए इसका? इट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, मतलब अगर नहीं भी हुआ, ये जो वर्ड है ना अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, इससे पता चलता है कि कॉन्सिक्वेंसेस इमटेरियल. ऑलराइट, now let's see this case. This is the leading case in this regard, Balwant Singh versus State of Punjab. That mere expression of derogatory or objectionable words may be not be a sufficient ground. कि सिर्फ आपने derogatory और कुछ objectionable बात कह रही है, that is not the sufficient ground. What will be seen? That those spoken words have the tendency or intention to cause to bring such hatred and disturbance in the public peace. All right. Now explanation 1 is provided here. Explanation 3 is provided here. And another important case is Kedarnath versus Union of India. Disloyalty against the government is not the same thing as commenting in strong terms upon the measures or acts of the government or its agencies. ठीक है, हम किसी गवर्नमेंट कोई भी ऐसे धरना वरना जब हम देते हैं या फिर कोई पॉलिसी के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ अपना ओपिनियन देते हैं, that would not amount to sedition. Okay, and what is the punishment provided is imprisonment for life, क्योंकि देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध है. Imprisonment for up to 3 years or fine may be added, or simply fine, depending upon the degree of the offence committed. Now we have question number 6. The power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces, etc. It is the basis of which of the following articles under articles under Constitution? The correct answer is section Article 33. And this was from the module 3 of the Edzorb Law Q Bank. अब आर्टिकल 33 क्या है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स. किनके रिस्पेक्ट में एब्रोगेट कर सकते हैं पार्लियामेंट? इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज. रीजन बीइंग कि ये लोग ऐसा काम करते हैं कि अगर इनको प्रॉपर राइट टू स्पीच और ये सब दे दिया जाए तो दे हैव सम लाइक इंसाइटफुल नॉलेज अबाउट आवर कंट्री. कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट नॉलेज भी होती है इनके पास हमारे नेशन से रिलेटेड. अगर वो कहीं लीक हो जाएगी तो दैट वुड बी अ लाइक huge loss to us. That is why such provisions are provided to you. Now we have question number 7. The President's rule under Article 356 remains valid in any state for the maximum period of 2 months, 3 months, 4 months or 6 months. The correct answer is D, 6 months. And this is from the Edzorb Law Premium Simplified Notes of the Constitution. देखते हैं emergency के simplified notes. सी प्रेसिडेंट रूल है, यहाँ पूरा हम प्रेसिडेंट रूल गिवन है. 2 ग्राउंड्स पे प्रोक्लेमेशन हो सकती है. पहला क्या है कि if it is satisfied that the state cannot be carried on in accordance with the constitution. Secondly,
whenever the state fails to comply with or give effect to any direction from the center. ठीक है, अब उसके बाद होती है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन. बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करेंगे और 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. All right. If it is approved by both the houses, then such emergency continues till 6 months. However, it can be extended to 3 years maximum. ठीक है, ये हमने पूरा सेक्शन पढ़ लिया about the president's rule. All right, now we have next question. Flying a national flag is a symbol of expression coming within the purview of Article 19(1)(a). It was held in case of Union of India versus Association of Democratic Reform, PUCL versus Union of India, Union of India versus Naveen Jindal. Yes, this is the correct answer, and this is the very famous case जिसकी वजह से आज हम घर घर तिरंगा लहराते हैं, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो. ठीक है, and this was from the case law flashcard series Edzorb law premium 2.0. So ये फ्लैश कार्ड्स आपको प्रोवाइडेड है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, in which the Supreme Court held that the right to fly the national flag with respect and dignity, ये नहीं है कि आपको फेंक देना है. It is a very disturbing visual जब हम ऐसा देखते हैं कि रास्ते में हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो पड़ा हुआ है, and that should be avoided actually. We must respect our national flag. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि right to fly the national flag with respect and dignity is a fundamental right. Keep in mind the words respect and dignity, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, all right. So such type of I mean this case can come as a short note in your examinations. और जब भी हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जब हम मेंस की आंसर राइटिंग प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या होती है, उसका इवैल्यूएशन. Unless you get your papers, your model answers evaluated, it is of no use, because आपको आपकी गलती ही नहीं पता चलेगी, आप आगे improve ही नहीं कर पाओगे. Now I'm going to show you an example how the copies are evaluated at Edzorb. Now see, this was the question. This was the second question paper from the MP Judicial Services, articles and summary writing. Now see, this is the that translation thing is provided. तो कितना इसमें डिटेल्ड आपको इवेल्युएट करा हुआ है. फर्स्टली ये इनकरेक्टली मार्क्ड है, ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, क्वेश्चन का नंबर ही गलत दे देते हैं. यहाँ पर तो ठीक है, वी स्टिल हैव इवेल्युएटेड इट, बट इन एग्जाम्स दे माइट नॉट इवेल्युएट इट एट ऑल. यू माइट गेट 0 marks इन दैट. तो बहुत ध्यान से हमको अपना एग्जाम का जो क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से लिखना होता है. ठीक है, एंड फर्दर आप देखो कि बहुत छोटी छोटी गलतियां जैसे द, व्हेन, ये सब आपको प्रॉपर करके दिखाया गया है. लाइक द कैपिटल्स ऑफ द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट कैपिटल्स में होना चाहिए ना द फर्स्ट वर्ड, तो वो भी नहीं है यहाँ पर. तो ये छोटी छोटी चीज जब तक आपको पॉइंट आउट करके ना बताई जाए, हम एक फ्लो में लिखते जाते हैं. वी डोंट पे मच अटेंशन टू दैट, बट द एग्जामिनर डू पे अटेंशन टू दैट एंड दे डू डिडक्ट योर मार्क्स फॉर दैट. ऑलराइट, अगर आप पहले से आपको पता होगा यहाँ मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आपका कॉपीज प्रॉपरली इवेल्युएट होंगी, तो फिर ये आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू हैव एक्स्ट्रा मार्क्स. ओके, and further I will show you one more thing. Now see, now here again it is wrongly marked, and secondly the question was about the summary writing and this candidate has translated it. क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 3 बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और जानो कि व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग. आप जो वो पूछ रहा है आप उसी का आंसर दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो सब चीजें कहाँ से आप सीखोगे, विद द इवेल्युएशन. ठीक है, so this was an example that how the copies are evaluated. Now moving on to the next question, question number 9. The landmark case of Golaknath versus State of Punjab was decided in which year? See, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा conflicted है. According to us, it is 1967. Google research में भी आप करके देखिए, it is 1967. But as per the official answer key, the correct option was option number A. So can't say anything about that. And this was again from the flashcard series of Edzorb Law Premium 2.0. See, it is AIR 1967 only, and this is one of the important cases when we study the fundamental rights. Okay, now we have question number 10. Though the people of this country differed in a number of ways, they all were proud to regard themselves as participants in the common heritage, and that heritage empathetically are the heritage of Sanskrit. It was held in the case of Santosh versus Ministry of HRD, Bomai versus Union of India, Commissioner Hindu Religious Endowment versus Lakshmindra, or none of the above. The correct answer is A. And this was from the CJS simulator mock. I must tell you कि जो simulator mocks and they are free to everyone. Before going for any of the examinations, these mock tests are released and you must solve them. क्योंकि कई बार आप देखो उसमें से ही भी क्वेश्चंस आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि ये मॉक टेस्ट बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड होते हैं, कंसिडरिंग द पैटर्न एंड द थीम ऑफ द स्टेट जहाँ कभी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो. ठीक है, दिस इज द फ्लैश कार्ड प्रोवाइडेड है.
Okay, now we have question number 11. Under which section of CRPC a person can be declared as proclaimed offender? अब वैसे तो सबको पता होता है सेक्शन नंबर 82. अब इसमें थोड़ा सा और अंदर डीप में जाके पूछा है सब क्लॉज में से. द करेक्ट आंसर इज डी. अब ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाएगा? जिसने एड्जॉर्ब का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन बार बार पढ़ी होगी. ठीक है, आई विल शो यू इट्स एक्सप्लेनेशन. And see, this was again from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. So this is section number 82. This is clause 4, जहाँ पे proclaimed offender defined है. Where a proclamation against is published under subclause 1 in respect of a person accused of an offence punishable under following sections. So what subclause 4 says is कि जब ये वाले sections में से जब person is accused, in such cases, if such person fails to appear at the specified time and place, the court may, after making such inquiry, pronounce him the proclaimed offender. All right. Okay, moving further, we have question number 12. Match the following with the correct options. ठीक है, इसका आंसर है A. तो देखते हैं इसको. A का थर्ड है suspected person section 109 and for habitual offenders 110 and 106 for keeping peace on conviction. ठीक है, अब हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना, वी मस्ट स्टडी व्हाट ऑल दीज सेक्शंस से, क्योंकि इस पे भी तो शॉर्ट नोट आता है ना मेंस के एग्जामिनेशन में. अब सी पढ़ना पता है इसी तरीके से होता है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करो, ताकि आप ऐसा ना हो कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए और हम मेंस क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है ना तैयारी के लिए, उस समय आप नहीं प्रिपेयर कर सकते. इसलिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ती है प्रीलिम्स और मेंस की. ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशंस पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स के साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, है ना इजी. सी सेक्शन 106 इज प्रोवाइडेड with all the subclauses and everything. 108 is provided to you. 109 is provided security for keeping good behavior from the suspected persons. 110 is provided. ये पूरा 106 से 110 का जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में तो आता ही है, मेंस में भी आता है. ऑल राइट. All right, so now moving further with the next question, question number 13. Section 126 of CRPC makes the provision for forum and evidence, forum and cost, forum evidence and cost. The correct answer is D. This is from the simplified notes of the Edzorb Law Premium 2.0. Section number 126. See, 125 is about the maintenance or 126 is about the procedure. अब इसमें प्रॉपर आपको गिवन है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट. किससे? वेयर द पर्सन इज, वेयर द पर्सन और हिज वाइफ रिसाइड्स, मतलब कौन से कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन होगा. ठीक है, ये प्रोवाइडेड है यहाँ. वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ और मदर और द लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड. एंड फर्दर ये दिखाता है कि द ऑल द एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लीडर. ऑल राइट. So evidence taking must be in the presence of the respondent or their pleader. Or their pleader कब होगा? When their attendance is dispensed with. Okay. See, the whole section is provided to you here. Okay, now we have question number 14. The conditional order under CRPC for the removal of nuisance may be passed by district magistrate, subdivisional magistrate, any other executive magistrate or all of the above. The correct answer is all of the above. ये question भी बहुत बार आता है. ठीक है. Now let's see section 133. This is इसमें तीन चीजें हैं, DM, SDM and executive magistrate specially empowered by the state. ठीक है, they can order to remove the public nuisance. All right, now we have question number 15. As per section 1 subclause 2, which chapters of CRPC shall apply to Nagaland? Chapter 9, chapter 8 and 7, chapter 7, 9 and 10, chapter 8, 10 and 11. The correct answer is D. Okay, and this was from the module 1 of the Edzorb Law Q Bank. See, section 1 is provided here. Proviso to section 1. कहाँ कहाँ apply नहीं होंगे? Short title extent and commencement states that the provision of this code other than those relating to chapter 8, 10 and 11 thereof shall not apply to state of Nagaland. Okay. Okay, moving on to the next question, question number 16. Which of the following is correctly matched? Section 179, ordinary place of inquiry and trial, where act is done. The correct answer is C. Yes, it is C. It is from the module 10 of the Edzorb Law Q Bank.
Section 183 is related to the offense committed on journey or voyage. All right. साथ में हम पढ़ेंगे section 100 and 188 when it is related to the offenses committed outside India. All right. Now the question number 17. A photograph can be proved by examination of the photographer and by proving the negative. It was held in which case? The correct answer is A. State of Gujarat versus Bharat. And this was the question number 82 of the CJS simulator mock 1. See, that is why I was talking कि mocks देना बहुत जरूरी है, इसमें से questions आते हैं क्योंकि नब्स पकड़ लेता है ना एड्सॉर्ब स्टेट की कि हाँ ये यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछेगा, तो वही ज़्यादातर करके मॉक्स में हम वही वाले क्वेश्चंस डालते हैं. ठीक है. Now question number 18. Section 91 of Indian Evidence Acts makes the provisions for contracts, grants, grants and other disposition of the property. The correct answer is D. Very important section of the Indian Evidence Act. It is also known as best evidence rule. All right, and this was from the module 11 of the Edzorb law Q bank. See, अब पूरा section 91 यहाँ पर लिखा हुआ है. जब देखो, when the terms of the contract, grant or any other disposition of the property, अगर आपने उसको लिख लिया है, if it is in a written form, then such thing, such contract, such grant and such disposition can be proved only with the help of that document only and of nothing else. ठीक है, तो ये होता है हमारा best evidence rule. All right. अब इसके कुछ exceptions हैं क्या? Public officer appointed in writing. Now see, we can understand this with the help of this picture. She is saying becoming IAS officer has been my dream. I'm proud of myself. So the writing by which she is appointed as IAS need not to be proved. Okay, this is first exception. And secondly, wills admitted to the probate. In India, the will may be proved by the probate. Probate क्या होता है? It is the copy of a will certified under the seal of the court of competent jurisdiction with the grant of administration of the state. Okay. And further इसकी explanations हैं कि when the contract in more than one document, it applies equally to the cases. सारे documents पे वो apply करेगा. When there are more originals than one document, then only one need to be proved. ठीक है. ऊपर वाला different है, वहाँ पे कई multiple stages में contract form हुआ है तो वो सारे proof करने पड़ेंगे. और दूसरे केस में क्या है कि एक original से ज़्यादा है तो सिर्फ एक original आप proof कर दो. ठीक है. Like see this image. Finally, all the files are ready. I photocopied them all from this single stupid file. Only the original file needs to be proved. And the other facts. The statement or a fact other than the facts referred in the section shall not preclude the admission of the oral evidence. Okay. This is the case law regarding that. See, did you know provides that section 91 क्या है? Best evidence rule. It has been laid down that when a document is presented, then the original must be accepted. Now we have question number 19. Which of the following is not correct? That accomplice is unworthy of credit, that an accomplice is not worthy of credit, a judicial acts have been regularly formed, that the common course of business has been followed in a particular case. The correct answer is B. See, ये जो ये वाला question है, ये सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं आता, ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई मस्ट से दैट ये इंटरव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप जब आप प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ोगे और साथ में एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, क्योंकि जो एड्सॉर्ब लॉ के क्वेश्चन बैंक्स है वहाँ पर आप क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो आपको ठीक उसके नीचे मिल जाती है उसकी एक्सप्लेनेशन. तो एक्सप्लेनेशन से आपकी मेंस की भी तैयारी होती है, आपके इंटरव्यू की भी तैयारी होती है और आपके आगे के प्रीलिम्स की भी एग्जाम तैयारी होती है. तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट. Up generally when we do not when we are not solving the questions bank with Edzorb, we are normally generally solving it with the help of books. Then it is very less likely that you will open the book, you will open the bare act जिसमें से आप उसको दोबारा से पढ़ोगे कि उसके explanations पढ़ोगे. You won't be doing that क्योंकि time कम होता है ना. It is very time consuming. All right. So आप देखते हैं इसको आगे कि कैसे हम इसको मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं. ठीक है. And this was from the module 14 of the Edzorb Law Q Bank. अब पहले सेक्शन 114 उसका क्लॉज बी क्या कहता है कि अनलेस कोरोबोरेटेड अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. ठीक है. अब क्यों हमने बोला कि अनवर्दी है वो क्रेडिट के लिए? बिकॉज अकम्प्लिस इज अ पर्सन ऑफ इमोरल कैरेक्टर, इट इज लाइकली टू लाई और डिसीव द पुलिस, माइट फेवर द प्रोसिक्यूशन इन द होप ऑफ पार्डन. जब हम किसी को अकम्प्लिस बनाते हैं तो जनरली उसको ये होप होती है कि हाँ मुझे पार्डन मिलेगा. तो ये हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ बायस्ड हो. और दूसरा उसकी जो टेस्टिमनी है क्योंकि वो भी अक्यूज्ड है, ही इज एन ऑफेंडर, वो दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द पर्सन जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है.
उन दोनों की टेस्टिमनी को इक्वेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए हमने बोला कि ये अनवर्दी ऑफ द क्रेडिट होता है। बट सेक्शन 133 क्या कहता है अब इसमें? इट सेज देन एन अकम्प्लिस शेल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, द कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। तो कई केसेस में ये बात आई कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों सेक्शंस में, एक कहता है कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है और एक कहता है कि कॉन्विक्शन इलीगल नहीं होगा इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी। तब दिस केस केम इनटू द फोर्स, द फ्रांसिस स्टैनले वाज इंटेलिजेंस ऑफिसर, उन्होंने बोला कि ठीक है, कन्विक्शन लीगल हो सकता है इफ इवन इफ इट इज ऑन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी, बट इट इज द रूल ऑफ प्रूडेंस दैट मस्ट बी कोरोबोरेटेड, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो इस पे ही काम करता है ना कि 100 गुनहगार छूट जाएं तो छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट कोरोबोरेशन इट इज नॉट वेरी प्रूडेंट टू कन्विक्ट अ पर्सन ऑन हिज टेस्टिमनी। ऑल राइट, तो ये क्या है? ये रूल ऑफ प्रूडेंस है, दिस वर्ड मस्ट बी रिमेंबर्ड। ऑल राइट, नाउ मूविंग फर्दर, question number 20. Any person can become incompetent to testify on the following grounds: extreme old age, tender age, extreme old age, disease, whether of mind or body, or any of the above grounds, right? ठीक है, this was from the module 2 of the Edzorb law ban. It is provided under section 118 of the Indian Evidence Act. अब सी हमने 3 पिक्चर्स देखी कि टेंडर एज, वेरी ओल्ड पीपल, इन्फर्म और सिक पर्सन, बस हो गया। अब हमें याद रहेगा कि ये तीनों चीजें, they are not competent to testify if they do not understand the nature of questions put to them. All right, moving further, question number 21. In which case it was held that the confession must either admit in terms of the offense or any rate substantially all the facts which constitute the offense. Agnu Nagesha, Sahu, Palvinder Kaur or Pakla Narayan Swamy. The correct answer is D. And this was from the flashcard series of the Edzorb Law Premium 2.0. ये रहा पाकला नारायण स्वामी। ऑलराइट, ये कहता है कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन द टर्म्स ऑफ ऑफेंस, या तो ऑफेंस के टर्म्स एडमिट कर लो, या फिर एट एनी रेट सब्सटेंशियली विच all the facts which constitute the offense. All right, now we have question number 22. The provisions regarding oral evidence is given in which chapter of the Indian Evidence Act? Again the index based questions. छत्तीसगढ़ की टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। All right, so the correct answer here is chapter number 4, and this is again from the simplified notes of the Edzorb Law Premium 2.0. Chapter 4 of the oral evidence, section 59 is provided here and the case related to that. Moving further, question number 23. In Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, agriculture includes horticulture, planting and upkeep of the commercial plantations, the reserving of land for the fodder, grazing or thatching grass, or all of the above. The correct answer is D. This is C, again from the simulator mock 2. Question number 100. Now we have question number 24. Which of the following sections is substituted by the Chhattisgarh Act number 6 of 2022 with effect from this? The section answer is A. This is very kind of ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं कि आप सही अटेम्प्ट ना करें इन्हें। मतलब आप अटेम्प्ट करो, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि ठीक है क्या है ये वो, अटेम्प्ट तो वैसे सारे ही करने हैं इसमें, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशंस, बट ये क्वेश्चंस इसलिए बनाए होते हैं कि सब लोगों को ये मुश्किल लगे। ऑल राइट, now we have question number 25. The qualification for appointment as a member of the Board of Revenue is mentioned in 5 clause 1, 5 clause 2, 5 clause 3. The correct answer is 5 clause 3, and this is from the module 4 of the Edzorb Law Premium 3.0. Okay, now the next question, this is again from the Chhattisgarh Land Revenue Code, that all officers shall be subordinate to commissioner, state government, additional tehsildar, naib tehsildar. The correct answer is B. This is again from the module 8 of the MCQ factory. Okay, now we have question number 27. The section 22 of Chhattisgarh Land Revenue Code is related to appointment of superintendents of the land records and assistant superintendents, subordination of the revenue officers, subdivisional officers or other officers. The correct answer is C. And this was from the module 16 of the Edzorb Law Premium 3.0. Now the next question we have is question number 28. The Code of Civil Procedure apply in all the proceedings under the Land Revenue Code when no express provision is made. This is provided under which section? Under section 43. This was from the module 16 of the MCQ Factory 3.0.
Now the next question we have is question number 29. As per the limitation of appeals, no appeal shall lie within the Land Revenue Code to the Commissioner after the expiration of 60 days from such date, to the Board of Revenue after expiration of 90 days from such date. Both A and B are correct, or none of the above. The correct answer is C. This is from the module 16 of the Chhattisgarh Local Laws MCQ Factor 3.0. Now the next question we have is question number 30. The term of assessment of land revenue made by the district survey officer shall ordinarily be of 15 years, 20 years, 25 years. Of course, it's none of the above because the correct answer is 30 years, which is not provided here. All right. This is from the module 12 of the MCQ Factory 3.0. Now the next question we have is from the Specific Relief Act. Under the Specific Relief Act, an injunction cannot be granted to restrain any person from applying to any legislative body, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in the criminal matter. Both A and B are correct, or none of the above. The correct answer is C. Now let's see the simplified notes of the section 41. So these are the grounds when the injunctions cannot be granted. So what are these? When the efficacious relief can be obtained, when the restrained person from the prosecute and judicial proceeding, restrained from applying him to the legislative body, restrained from instituting the criminal matters, contract not specifically enforced, not reasonably clear to be a nuisance, where the plaintiff has acquiesced, impede or delay the infrastructure project. This was added by the 2018 amendment. The conduct of the plaintiff is such, or there is no personal interest of the plaintiff. All right. Now question number 32. Section 36 of the Specific Relief Act is related to preventive relief, how granted, declaratory decrees, both A and B, or none of the above. The correct answer is A. And this was from the module 3 of the Edzorb Bank. Now section 36 provides preventive relief, how granted. Preventive relief is granted at the discretion of the court by the injunctions temporary and perpetual. Here we get to know the difference. ये short note में आता है आपके examinations में, in your mains. All right. अब आगे देखते हैं. So section 37 से 42 तक है, that deals with the injunctions in general. ठीक है. Granting injunction rest on the discretion of the courts. Injunctions क्या होते हैं? This discretion has to be exercised under the well-established principles. Okay, and there is no statutory limitation on the power of court. These things must be remembered. अब क्या टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस होती है? इट में भी टेम्परेरी, प्रिवेंटिव, मैंडेटरी और परमानेंट इंजंक्शंस. मूविंग फर्दर, सी आपका पूरा इंजंक्शंस का टॉपिक यहाँ रिवाइज हो जाएगा, चाहे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. ठीक है. अब सेक्शन 37(2) आपको प्रोवाइडेड है कि परपेचुअल इंजंक्शंस क्या होते हैं. All right. Section 38 talks about the procedure to grant the perpetual injunctions. Section 39 talks about the mandatory injunctions. ठीक है. All right. Now we have question number 33. Under which section of the Specific Relief Act the cancellation of instruments may be ordered? The correct answer is section number 31. Again, a section based questions. ऐसे थीम पकड़नी होती है हमें स्टेट के एग्जामिनेशंस की कि वहां से क्या पूछते हैं. तो आप देखो ज्यादातर करके, ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है सेक्शन बेस्ड है. तो फॉर दैट वी नीड टू रिमेंबर सेक्शन नंबर्स एज वेल. एंड दिस वाज फ्रॉम द मॉड्यूल 5 ऑफ द एड्जॉर्ब बैंक. अब कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन है. हु कैन क्लेम द कैंसिलेशन? फर्स्ट द पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडली द पर्सन अगेंस्ट हुम द इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल. इसका रिलेटेड केस लॉ आ जाता है आपको, एंड फर्दर other things about that. Now we have question number 34. The rescission of the contract may be adjudged or refused when? When the contract is voidable or terminable by the plaintiff, it is unlawful, the defendant is more to blame than plaintiff, or all of the above. The correct answer is D, all of the above. And this was from the module 2 of the Edzorb Bank. देख लेते हैं section 27 को. The court may adjudge to rescind a contract. कैसे? Voidable or terminable by the plaintiff, unlawful for the causes not apparent, and the defendant to be blamed more than the plaintiff. All right. अब ये देखो, वकीलों की ड्रेस कैसी होती है? ब्लैक एंड व्हाइट. आपके बैरक्स कैसे होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट. तो इस लॉ की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जो थोड़े बहुत कलर्स आते हैं वो आते हैं एड्जॉर्ब से, बहुत ही कलरफुल तरीके से, जैसे आप देख भी रहे होगे एक्सप्लेनेशन में कि किस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको चीज़ें याद रहें. ये जितने भी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप सिर्फ पढ़ो नहीं, आपको चीज़ें समझ भी आएँ और आपके दिमाग में रिटेन भी रहें, क्योंकि अल्टीमेट एम तो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है ना, आपको रिकॉल करना पड़ेगा एग्जाम्स में. तो जो
7 रंग, पूरे सारे कलर्स हमारे लॉ के जुडिशरी के प्रिपरेशन में जो लेके आता है वो होता है एड्सॉर्ब। और इसी तरह से आप पढ़ के यू विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स। ट्रस्ट मी, आप जब क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी गाइडेंस और करेक्ट माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करते हैं ना, देयर इज नथिंग व्हिच कैन फेल यू। ऑल राइट, सो you need to be positive about your preparations. All right, now we have question number 35. Chapter 3 of Specific Relief Act is related to the rescission of contract, rectification, both A and B or none of the above. The correct answer is B. Section 26 relates to the rectification of the contract. Now let's see this. अब देखो, एक पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है। प्राइस ऑफ कार, ये कितना लिखा हुआ है, 50 करोड़ रुपीस। इसकी प्राइस 50 करोड़ रुपीस लिखी हुई है, पर ये कुछ एरर है। हमको रेक्टिफाई करने का क्या मतलब है, वी आर करेक्टिंग दी एरर्स। सो हियर इज सेइंग इट्स ओके, वी कैन ऑलवेज रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 26 ऑफ एसआरए। ठीक है। Now the next thing, under the Specific Relief Act, the special provision for the contract relating to infrastructure report project is related to, ये भी recently added है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जो recent amendments होती हैं they are very important। ये है, इसका correct answer है 20A। It is related to the infrastructure projects. It is from the simplified notes of the Edzorb Law Premium 2.0. See, it is added by the 2018 amendments. क्या कहता है ये 20A कि कोई भी इंजंक्शंस, नो इंजंक्शन टू बी ग्रांटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर दे रिलेट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स when such injunction would cause impediment or delay in the progress or the completion of the infrastructure project। क्यों ये बनाया कि कोई पब्लिक कन्वीनियंस के लिए या पब्लिक गुड के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आप इंजंक्शन ले लो तो इंजंक्शन ग्रांट ही नहीं करी जाएगी, ताकि वो चीज़, वो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, question number 37, who may obtain the specific performance? Any party thereto, the representative in interest or a principal of any party, a reversioner in possession, or all of the above? The correct answer is D, all of the above. It is from the module 4 of the Edzorb Law Q Bank. Now see, it is provided in section 15. Who may obtain specific performance? Any party, representative in interest, compromised beneficiary, new company arising out of the amalgamation, reversioner in possession, tenant for the life or the remainder man. Now question number 38. Rights of the purchaser or lessee against a person with no title or imperfect title are related to section number 13. The correct answer is B. This is from the module 4 of the Edzorb Law Q Bank. Alright, section 13 provides it for the same. It is somewhere थोड़ा सा ये सिमिलर होता है, फीडिंग द ग्रांट ऑफ द एस्टॉपल, ये क्वेश्चन भी आता है। ये दिस प्रिंसिपल इज प्रोवाइडेड इन टीपी है, और ये उससे ही मिलता जुलता सेक्शन है। ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, सी हियर इट इज प्रोवाइडेड द फीडिंग द ग्रांट बाय द एस्टॉपल 43 ऑफ टीपीए में है और सेक्शन 13, ये दोनों सिमिलर है। ऑल राइट, now we have question number 39. The state government shall by notification constitute a tribunal in terms of dash of the constitution to be called as Chhattisgarh Rent Controller Tribunal. The correct answer is this, 323 clause B. This is from the module 1 of the MCQ factor 3.0, and I must tell you that recently for this examination, Edzorb has provided its simplified notes related to Chhattisgarh Rent Control and Chhattisgarh Excise Act free of cost in the Telegram group. So if you want to have those notes, you can join our Telegram group and get it further free. And not only this, there is so much of material which is free of cost provided in the Telegram group and in our app. So stay connected with that. Now the next question number 40. The rent controller shall be subordinate to the collector, rent control tribunal, deputy collector or commissioner. The correct answer is B, Rent Control Tribunal. This is again from the module 3 of the MCQ factory. And I must tell you, though these are provided free of cost to you, it does not mean that Edzorb has compromised with its quality. अभी recent examples मैं आपको देती हूँ। अभी बिहार का जो एग्जाम हुआ था, the administrative law notes were provided free of cost to everyone. But almost all the questions were from those notes only. So if you want to have those notes, join our Telegram group. Okay. Now we have question number 41. Under the Chhattisgarh Rent Control Act, powers and the function of the rent controller are related to section 8, 9, 10 or 11. It is section 9. And this is again from the mock, CGS simulator mock.
साथ में आप ये सभी सेक्शंस भी पढ़ लीजिए क्योंकि सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं छत्तीसगढ़ में। अब आपने देखा होगा अभी कंटेंट को एक्सप्लोर करते वक्त कि देयर आर सो मेनी पिक्चर्स, तो हमने क्यों इतने सारे पिक्चर्स अपने इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि इट इज I told you in the starting itself that it is designed in a very scientific way. So see, according to the Harvard Gazette, we are visually wired. Drawing effect. When your mind is under pressure, you will, if you draw, you will remember the things. Secondly, your learning becomes 60,000 times faster. Yes, 60,000 times faster. और टेक्स्ट तो कभी खत्म ही नहीं होता, जबकि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कैप्चर्ड बाय द माइंड इन 0.013 seconds. 0.013 seconds. Amazing, isn't it? And thirdly, the retention effect. जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं that has only 10% retention rate. इससे क्या होगा, 3 hours बाद you tend to forget everything, whereas images have 90% retention rate. तो हार्ड वर्क जरूरी है पर स्मार्ट वर्क भी जरूरी है. टेक्स्ट से पढ़ना, रट्टे लगाना, रट्टो ये सब करना, दिस इज ऑल हार्ड वर्क बट नॉट द स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क होगा हम पढ़ रहे हैं और हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में इस क्वेश्चन बैंक्स की, ये हो गया का स्मार्ट वर्क. तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क विल टेक यू टू योर गोल. ओके, now we have question number 42. Under the Chhattisgarh Rent Control Act, every teenage shall have rights according to Schedule 1. ये schedules इसके important है, हमें पढ़ने होंगे. And this was from the module 1 of the MCQ Factor 3.0. Now we have question number 43. Right to seek from the rent controller eviction, the tenant will be on the ground. The tenant becomes a social nuisance if the tenant is a habitual defaulter in payment of the rent or other dues. Both A and B are correct, right? Both are correct. This is from the module 1 of the Chhattisgarh Local Laws MCQ Factory by the Edzorb law. Now we have question number 44. अभी एक और क्वेश्चन आया था शेड्यूल में से, ये दूसरा आ गया कि शेड्यूल 3 is related to what? It is related to the landlord's obligation. This is again from the module 1 of the MCQ Factory 3.0. Now we have question number 45 again from the Rent Control Act. I'm telling you, do get yourself this Rent Control Act simplified notes which are provided by the Edzorb. That would be of huge help to you. Okay. Under Chhattisgarh Rent Control Act, the total schedules are 6, 5, 3 or none of the above. The correct answer is none of the above because correct answer is 4. We have 4 schedules there. Now question number 46. Section 2B of Chhattisgarh Rent Control Act is related to. See, according to us, all the options are incorrect, but according to official answer key, the correct option is B. And this was again from the module 2 of the Edzorb Law Premium 3.0 MCQ Factory. Now we have question number 47. Under Indian Contract Act 1872, a wagering agreement is treated as voidable, void, treated as public policy, or treated as valid. The correct answer is B. This was from the module 19 of the Edzorb Law Q Bank. Wagering contracts क्या होते हैं? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं शर्त टाइप के, शर्त लगाना कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इनको बोलते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. तो किसी के लिए कोई बेनिफिट नहीं होता, एक दूसरा जना लॉस में भी चला जाता है. सी, तो क्या फीचर्स हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के? देयर आर 2 पार्टीज, अनसर्टेन इवेंट, नो इंटरेस्ट अदर देन द स्टेक, नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट. अब बारिश होगी कि नहीं इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है. ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 48. An agency under Indian Contract Act is terminated when principal revokes the authority, the death of either principal or agent, principal being adjudicated and insolvent, or all of the above. The correct answer is D. And this was from the module 25 of the Edzorb Law Q Bank. See, it is provided under 201. कैसे रिवोक होती है? renunciation, revocation, completion of the business, insanity or death of the principal agent, or insolvency of the principal. All right. Now the next question. A enters into a contract with B. In this, B is guilty of fraud. A can now resign the contract but cannot get the compensation, get compensation only, resign the contract and get compensation, or none of the above. The correct answer is C. And this was from the module 6 of the MCQ Factory 3.0. Alright, so as we finish up, just remember that each step that you take matters a lot. Challenges आएंगे, but what are challenges? They are just the opportunity to show your strength. And with each challenge, you will move towards closer to your goal. Alright, there is one writer who said that the best way to get a thing done is keep moving forward. So think of it like this. When the things get tough, don't give up. Just keep moving. Okay, and eventually you will have your goal. Alright, so until we meet again, keep learning law,
Keep your promise to work hard, keep shining, and keep pushing yourself. All right, bye bye.